And now our reporter who is at the IGI airport at the ground level is there to welcome our hockey heroes from Paris. Everyone's gearing up with all the celebrations. Let's see the reactions shortly. We're awaiting their responses in a bit. Heroes return. This is a heroic welcome for our winners, a historic moment indeed for all the sports enthusiasts across the country, an effort that has not been unfounded anymore. It's something that's given us a result that we were all hoping for, a very, very well fought effort. We can see live visuals from the Indira Gandhi Airport in Delhi where all of them are being welcomed. The glory of the hockey players is been reinstated perhaps in the country, and will probably inspire more youth to take up the sport in a country as crazy with cricket fans all over. We'll keep on bringing you updates. We hope to also get in touch with the winners shortly with more interviews for you. And now we're awaiting more fresh visuals. As you can see on your screen, the heroic welcome for our hockey champions from the Paris Olympic as they secured a medal. Indeed, a historic moment for all the sports enthusiasts and also Indians at large. I mean, sports is something that's not been given the kind of attention it deserves, while we all expect medals, and a win such as this is definitely going to inspire more people to take up sports more seriously, and perhaps a message for the parents. More inspiration for the parents to let the kids go out and get into the sporting arena as well. And a grand welcome for our hockey team. Some of the hockey team members, of course, are still in Paris. That includes Priya Sijesh, and right now we're getting my visuals as the hockey team members arrive in Delhi. And viewers, of course, it's been a historic bronze medal for बिल्कुल आई थिंक मेडल होता है और देश के लिए मेडल लेके आना सबसे बड़ी बात है। जो हमारी कोशिश थी कि हम फाइनल तक जाएं और गोल्ड मेडल जीतें, बट अनफॉर्चुनेटली वो हमारा सपना पूरा नहीं हुआ। बट हम खाली हाथ वापस नहीं आए एंड बैक टू बैक ब्रॉन्ज मेडल जीतना ये भी हिस्ट्री है हॉकी के लिए, और आई थिंक बहुत प्राउड है हम। किसको डेडिकेट करेंगे ये मेडल? ये पूरे इंडिया को करेंगे कि जितना आप लोगों ने सबने प्यार दिया है हमें, वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये स्पोर्ट आपकी हमेशा हमारे साथ रहे, यही उम्मीद करते हैं। आई थिंक काफ़ी इमोशनल मोमेंट था उनके लिए भी, और क्योंकि इतना समा उन्होंने जो हॉकी को दिया है, टीम को दिया है, आई थिंक वो बहुत बड़ी बात है। एंड लास्ट मैच खेलना और मेडल के साथ फिनिश करना, इससे बड़ी बात उनके लिए भी कोई नहीं है। तो हमारा यही था कि
उन जो वो जा रहे हैं तो उनको अच्छे से भेजें, मेडल के साथ भेजें और हम बहुत खुश हैं उनके लिए। बट ऑफ कोर्स अभी वो रिटायरमेंट दे चुके हैं, बट वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे, नो डाउट। सरपंच उपाधि दी गई, भी आपकी तारीफ की, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे जो टैग नाम दिया गया? नहीं, बिल्कुल सर, आई थिंक जो सपोर्ट मिल रही है स्पोर्ट्स को और सभी गेम्स को, आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रियली वांट टू थैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारे साई बेंगलोर और आई थिंक साई के एंड जो हमारी उड़ीसा गवर्नमेंट है एंड हमारी हॉकी इंडिया, आई थिंक इनकी बहुत बड़ी सपोर्ट है हमें। और एज ए प्लेयर सबको यही होता है कि आपको सब सपोर्ट मिले, जो आपकी रिक्वायरमेंट हो आपकी पूरी हो, तो आई थिंक वो हमें मिली है और आई रियली वांट टू थैंक। 2028 में आपको ओलंपिक में मेडल्स लगातार इंडियन हॉकी टीम ने ओलंपिक्स में जीता है, क्या कहेंगे? लास्ट क्वेश्चन। बहुत खुश हैं और बहुत प्राउड हैं क्योंकि हॉकी के लिए बहुत बड़ी बात है और जितना प्यार अब मिल रहा है हॉकी को, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी डबल करता है और हम भी कोशिश करेंगे कि जब भी मैदान में जाएं और देश के लिए मेडल लेके आएं। थैंक यू क्या कहेंगे? थैंक यू। So that was the Indian hockey team's captain Harmanpreet Singh with 2 goals against Spain, finishing the tournament as India's leading goal scorer. Remember, with a total of 10 goals, he led India from the front. We saw in that bronze medal match as well. And of course, we're also talking about India's legendary hockey goalkeeper, Yasir Desh, who has right now just announced retirement, ending his career on a high. And it is a rousing welcome for a men in blue at the IGI airport in New Delhi. Of course, they will be also felicitated by the sports minister today, and there will be media interaction also later on. And there you have a hero's welcome for our bronze medalists and some of the hockey team members yet to arrive in Delhi. But there you have the visuals that have come in with doles, with drum rolls, and with, of course, garlands. They have been welcomed in a grand manner. And, of course, India has made a record here. India won successive Olympic medals for the first time in 52 years in hockey. They beat Spain, taking India's, of course, adding to India's medal tally. And remember, even India has clinched the latest bronze medal last night, courtesy wrestler Arjun Sehrawat. And of course, all eyes will also be on the interim ruling, the ruling on Vinesh Phogat's appeal for a silver. So India's medal tally has, of course, at least reached 6, and that's what the fans are now expecting. And heroes now returning home. A grand welcome for every medalist, viewers, as we see. And hockey team expected to be felicitated later on. The insights, and we're definitely tracking this very delightful news this Saturday, and we'll be bringing you more updates as and when we receive them.